both. Start with the first one, which is for second paper. ठीक है, 2023 का है, पेपर 2. Now first, obviously we have divided this entire Indian economy into 10 different parts. ठीक है, वो प्री इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज 1, then public finance, then external monetary management, planning, current related topics, all problems club as unemployment, poverty, price rise or inequality. So we have divided it into 10 different parts. Now this first question says land system during the British rule was responsible for sustained poverty and stagnant growth in the Indian economy. एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब इन सब का आपके पास एक वेल प्रिपेयर्ड रिटन आंसर होगा, यो कुछ सोचना नहीं है, बस एज इट लिख देना है वो. So this one question is from the pre-independence, the first one. How did VK Rao improve upon the earlier estimate of national income estimate of the Indian economy? तो VK Rao का जो contribution है in the estimation of the national income, it is coming under the category of planning. प्लानिंग और नेशनल इनकम वाले अकाउंट के अंदर, मतलब सर्विसेज को कैसे इंक्लूड करेंगे. सर्विसेज वर इंक्लूडेड, इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ रेंट वाज इंक्लूडेड. सो व्हाट वर द वेरियस कंट्रीब्यूशन मेड बाय द VK राव व्हेन वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम. सो आज की डेट में जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम देख रहे हैं, इट इज़ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, मतलब हाउ एंड इन व्हाट वे VK राव इम्प्रूव्ड अपॉन दैट एस्टिमेशन. Examine the impact of green revolution on production and productivity in the agriculture sector. So this question is again from agriculture, but ये regular question है. Green revolution एक regular topic है. Impact of green revolution on production and productivity. That means the question is now specific. If the question would have been impact of green revolution on the Indian agriculture, so impact could be in the form of production also, for productivity also. Impact was on the regional inequality also, impact was on the income inequality also, impact was on the other areas as well, but here the question is referring to only production, and that means question ने आपको limit कर दिया कि you have to explain only for the production and productivity. De-acceleration of the structural retrogression have been the key feature of industrial sector in India during 1965 to 1980. Give reasons. अगर आप PYQ देखोगे तो ये जो भी क्वेश्चन लिखे गए ना, ये यू विल फाइंड दोज क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो. स्ट्रक्चरल डीएक्सलेशन एंड द स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन हैव बीन द की फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द 1965 to 1980. स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन एक्चुअली द टर्म यूज किया जा रहा है व्हेन देयर वाज नो करस्पॉन्डिंग चेंज इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑल्दो द सेक्टोरल कंपोजिशन वाज चेंजिंग, बट जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर उसके अंदर चेंज, तो दोज विल बी. बट पॉइंट ये कि जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन है ये 5. फिफ्थ इज एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सलेशन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इन द डेकेड ऑफ 1980 एज अगेंस्ट 1960 एंड 1970s. तो अभी तक के जो क्लास के उससे कुछ रिलेट हो सकता है. In the decade of 1980 as against 60s and 70s. So prior to that there was a slow growth rate, mainly characterized by the agriculture growth rate, Hindu rate of growth, license quota, permit raj, जो initial first lecture है. 1980 was the first turnaround. It was mainly for the pro business. Elaborate that pro business policy here also. तो ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है. That means in that compulsory question you find one question from the pre-independence, one question from the agriculture, one question from, we can say, the industry or overall, that in fact one from the growth part and the other from the industry, and one question from the planning. ठीक है, national income account. That means well represented but not very difficult question, we can say. How many current based question, वो myth actual में break करना. How many current based question in that compulsory? You won't find any कि current based question को पूछे गए. That means यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है, you have to basically identify, मतलब आपको फैक्ट सजेस्ट करना है कि कितने करंट बेस होते हैं. दैट मीन्स इन सबका एक स्टैंडर्ड आपके पास एक रिटन आंसर अगर अवेलेबल हो और वो याद हो तो एज इट इज लिख देना है.
Then second was explain the main feature of money and credit policy in India during pre-independence. So second question from the pre-independence, but for 20 marks. बट अगेन ये सारे क्वेश्चन आपको मनी और क्रेडिट पॉलिसी सब गिवन, मतलब यू हैव द अवेलेबल इंफॉर्मेशन सोर्स. What are the factors contributing towards shift in the sectoral composition of GNP in India during the pre-economic reform period? Again pre-91. Contributing towards the shift in the sectoral composition of GNP. Sectoral composition means agriculture, industry and सर्विसेज. तो उसका जो सेक्टोरल कंपोजिशन चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 50s, 60s, 70s, 80s एंड 90s, उस पीरियड को एक्सप्लेन करना है. एंड यू हैव टू बेसिकली कंपेयर इट ऑलवेज विथ व्हाट वाज हैपनिंग इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि एग्रीकल्चर में कैसे चेंज हुआ, इंडस्ट्री में कैसे चेंज हुआ और सर्विसेज में इन विच सेक्टर इट वाज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, इन विच सेक्टर इट वाज इन द अनडिजायर्ड डायरेक्शन. डिजायर्ड इन द सेंस शेयर ऑफ एग्रीकल्चर विल फॉल, दैट वाज प्रोग्रेशन, but the share of initially industry should have expanded rather than the services. Explain the main reasons for de-acceleration in agriculture growth in India during the post-economic reform period. ये post-economic reform period की बात हो रही है. Main reasons for de-acceleration in the agriculture growth in India during the post-economic reform period. So 91 onwards here. So what we can contribute when we talk about the structural reform of 1991, what were the areas? Industrial policy, external sector reform, fiscal and monetary. It was not directly addressing the problem of agriculture. The first generation reform, the structural reform, you can say, has bypassed the agriculture sector reform, and because of that we can say one factor is that the lack of agriculture growth, particularly after 97-98, and that was also the reason for slow growth of Indian economy after 97-98. 91 to 97-98 there was high growth because of the pro market policy, first generation policy, but that was growth mainly in the industry, mainly in the service sector. But 97 onwards there was lack of growth, mainly because of low growth in the agriculture area. So in the agriculture sector we will be dealing with that, but post reform you can stretch it till the current part. ठीक है, आप उसको करंट पार्ट मतलब 97 के बाद के पीरियड को, दैट मीन्स अराउंड वी कैन से लास्ट 20-25 ईयर का आपको डिस्क्रिप्शन देना है. डिस्कस द रोल ऑफ गाडगिल इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. अगेन इन टर्म्स ऑफ द प्लानिंग, role of public sector in the Indian economy, also point out the main problem faced by the during the period 1970 to 1980. Role of public sector in the Indian economy, but obviously रोल करेंगे तो यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स आपके पास है. I said in that first class, if you go with the static concept, अगर आप मिर्जापुरी से कवर कर लो तो आप मिर्जापुरी पब्लिक सेक्टर का चैप्टर खोलो, वहाँ पे रोल को वेल डिफाइंड है, वो मतलब 7-8 पॉइंट्स गिवन है. Role in the form of employment, role in the form of regional balance, role in the form of creating strong industrial balance, role in the form of promoting overall development, role in the form of creating employment. So all those has been written there. Point out the main problems faced by during the period. तो problems पे वहाँ पे mention है, तो अगर वो points मालूम है, that means if you combine both you have around 10-15 points. Few for the role and other for the problems, but again there is nothing current related to that. Explain the concept of ceiling on agriculture land holding in India. Examine the rationality with respect to equity and efficiency. And now these type of question will become difficult if you do not know specific. ठीक है, तो it is not that every question will be getting direct, but these will be the question. अगर आपको specific नहीं मालूम है, you cannot write it for, let us say, 200 words for those topics. Explain the main causes of inequality in income distribution in India. Examine how it affects welfare of society. So it is in that category of all problems of the Indian economy. Inequality is one. Pattern and trends of national income in India during the pre-economic reform period. Pattern and trends of national income. It is pattern and trend. So pattern and trend, how you will examine in the pre-reform.
फर्स्ट क्लास में आपने 50s 60s 70s 80s 90s का डेटा लिखा है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्री, फॉर services and the overall GDP. You have to basically explain that part. Pattern is basically that and the trend. Explain the development of the cotton industry in India during the pre-independence periods. So you find 3 questions from the pre-independence. एक 15 मार्क्स का है, एक 20 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का है. ठीक है, तो 3 to 4 क्वेश्चन जनरली रहेंगे वहाँ पे. मतलब 45 मार्क्स का क्वेश्चन ये प्री इंडिपेंडेंस का हो गया. Then second section will be basically related to the external sector. Only dominated होता है external sector होगा, monetary management होगा, public finance के question will find more main in section B. Distinguish between explicit and implicit subsidy. Explain the trends in the explicit subsidy on irrigation and fertilizer in India during the post-reform period. Salient features of action plan for disinvestment 2009. ये टॉपिक आप इंडस्ट्री के कैटेगरी में रखोगे, बट ये पोस्ट रिफॉर्म के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल फिस्कल डिसिक्लिब्रियम इन फेडरल सेटअप एंड हाउ डिड 12th फाइनेंस कमीशन करेक्ट सच इम्बैलेंस. सो इट टॉक्स अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल इम्बैलेंस. शो हाउ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. अब ये मॉनेटरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो गया रिलेटेड टू द मनी एस्पेक्ट. Liquidity adjustment facility in India emerged as an effective monetary policy instrument in controlling market fluctuation in. So now you can say this is a current more or less current related question here. How LAF basically function in the economy. Examine the effectiveness of universal basic income as an approach to poverty alleviation. ये question I think 3rd या 4th टाइम पूछा जा रहा है. सेम क्वेश्चन. UBI का कंसेप्ट कभी प्रोज एंड कॉन्स पूछे गए हैं, कभी इम्पैक्ट ऑन द पॉवर्टी रिडक्शन है, वेदर यू आर इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम और नॉट. तो आई थिंक 3rd और 4th टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया. डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर उरुग्वे राउंड एंड एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑन. अब ये एक्सटर्नल सेक्टर का क्वेश्चन हो गया, बट इसमें करंट पार्ट नहीं है. इट इज़ बेसिकली फॉर द उरुग्वे राउंड, दैट बिफोर गैट और बिफोर WTO. तो गैट के एग्रीमेंट से बेसिकली. स्टेट द की फीचर्स ऑफ TPDS. डू यू बिलीव दैट TPDS हैज बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. तो कैन रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999 and you have to compare it with the FAIR of 1979. It was earlier foreign action regulation. Due to shortage, the earlier need was to regulate, and in 1991 there is no shortage. So now you have to basically manage it. So but there are various other differences as well. Then briefly explain the growth and structure of India's foreign trade in the post-liberation period. Growth and structure of India's foreign trade in the post-liberation period. So since 1991, growth and structure. So when you explain the structure, what you will explain? Structure of foreign trade means what? Composition and direction of the export and import. What you are exporting, to whom you are exporting, what we are importing, from where we are importing, and how that trend has changed over the period of, how the share of export has increased in the world trade. Critically examine the contribution of special economic zone in promoting foreign trade in India. Again for the foreign sector के ये second part भी है and the third also. मतलब all three question, if you have done one external sector complete, you have one complete question for the external sector. All three question. Discuss the silent features of the new industrial policy of 2023. ये latest question हो गया. But all three parts are from external sector. This one is for the public finance. State the main provision of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. Do you agree that this act has been successful in promoting the democratic deindustrialization in Indian economy? Explain the reasons for sluggish growth in employment in India during the post-reform period. अब क्वेश्चन post-reform period जब लिखता है तो you are expected to start from 1991 till the current part. तो
तो करंट आएगा तो अब आपके आंसर में कोविड, उससे पहले का इम्पैक्ट, उसके बाद के इम्पैक्ट भी आंसर के फॉर्मेट में होंगे। एक्सप्लेन द चेंजेस इन द वेज स्ट्रक्चर इन इंडिया इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड। वेज स्ट्रक्चर इन द इंडिया, नाउ ये स्पेसिफिक पार्ट हो गया। सो आउट ऑफ दोज मेनी टॉपिक्स यू फाइंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस। I have written basically this. You get 3 questions from the pre-independence period, 4 questions from agriculture, 3 questions from industry, 5 questions from external sector. ठीक है, 5 questions from the external sector. All problems like inequality का question है, poverty का question है, so 3 question. Public finance you get 3 question. Growth and its composition there are 2. फ्रॉम प्लानिंग सेक्शन एक VKRB राव का कंट्रीब्यूशन भी आ गया और गाडगिल का कंट्रीब्यूशन भी आ गया। एंड द करंट रिलेटेड टॉपिक यू कैन कंसीडर एज द वेज स्ट्रक्चर टॉपिक। सो 2 क्वेश्चन रफली आई हैव जस्ट डिवाइडेड, सो वेल रिप्रेजेंटेड। मतलब क्वेश्चन का बेसिकली फॉर्मेट ये होता है, यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी ईयर, बट पॉइंट इज दैट आउट ऑफ दैट 28 क्वेश्चन, how many question you can find that it is based upon the last year development or current program of any government, जो current issue से relate करते हुए क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ इसका मतलब हो गया कि जो प्रीडोमिनेंटली जो पेपर होता है वो ज़्यादातर स्टैटिक पार्ट में ज़्यादा रहता है। स्टैटिक का मतलब हो गया जिसका आपके पास एक वेल प्रिपेयर्ड आंसर होना चाहिए। द मार्क्स विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन जो आपने लिख रखा है वो आप कितना रिप्रोड्यूस कर पाते हो, ठीक है। एंड दैट विल अगेन रिक्वायर हाउ मच स्पेसिफिक यू आर राइटिंग, हाउ मच पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे लैंग्वेज यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इन दी। यहाँ तो आप लिख रहे हो बट वो देख के लिख रहे हैं या डिक्टेट किया वर्ड पर, इसी को आपसे एक्सपेक्टेड है कि वो आंसर में आना चाहिए। सो हाउ मच दैट पार्ट यू कैन रिप्रोड्यूस देयर, ठीक है। सो पेपर है ये आपके साइट पे अपलोडेड होगा, वहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। ये टॉपिक वाइज जब आपका रिवाइज हो जाएगा, जब मतलब आपके पास ऑल टॉपिक वाइज हैं, 23 के क्वेश्चन को इंक्लूड करके दोबारा अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है, दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड दैट इज़ वाई एम फोकसिंग कि स्टैटिक जो पार्ट होगा उसको आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखोगे। दैट मीन्स इफ़ यू आर रीडिंग फॉर एनी बुक तो मिर्ज़ापुरी से आपको एक्चुअल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर उसका प्रॉब्लम पूछा गया तो ये सारे आंसर पॉइंट्स में अगर हमारे पास मालूम हो देन यू कैन राइट इट मोर इफेक्टिवली। एंड द पेपर 1 वाज आल्सो वेरी एक्सपेक्टेड, दिस इज पेपर 1। Examine the role of price elasticity of demand in determining the price set by the discriminating monopolist. Refers to third degree price discrimination, where market is divided between two based upon elasticity of demand. जिस मार्केट में elasticity of demand greater होगी वहाँ प्राइस कम होगा। थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन में what do we equate? Marginal revenue of market 1 equated with marginal revenue of market 2, and MR is always equal to P into 1 minus 1 upon elasticity. तो मार्केट 1 के लिए जैसे लिखेंगे वैसे मार्केट 2 का लिखा है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए MR1 must be equal to MR, but MR1 equal to MR2 means that P1 into 1 minus 1 upon E1 should be equal to P2 into 1 minus 1 upon A2. Now since prices are different, since elasticity are different, therefore prices will be different. So elasticity play a role in determining price set by the discriminating monopolist. बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, ये कंज्यूमर थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केनीशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स, नो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ब्रॉडली ना तो इसने न्यू क्लासिकल बोला है, न्यू केनीशियन कह रहा है, ये डायरेक्टली ओवरऑल क्लासिकल एंड केनीशियन पे। सो फर्स्ट क्लास ऑफ मैक्रो यू एक्सप्लेन ऑल पॉइंट्स, यू हैव 8-10 डिफरेंट पॉइंट्स टू इलाबोरेट द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड, बट जब क्वेश्चन इजी हो जाए तो मार्किंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। मतलब नाउ दे विल बी लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक, ठीक है, हाउ वेल इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड। व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन में भी आएगा।
Explain why it is considered difficult for open market operation to affect both availability and this will be coming as a monetary management. Explain the Cornet model of duopoly using the reaction curve. Interpret it as a Nash equilibrium. तो डायरेक्टली कॉर्नेट मॉडल ये रेगुलरली क्वेश्चन आपको मिल रहा है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इनकॉम्पेटेबल विथ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. अब डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते इनफैक्ट, बट यू रीड must know increasing returns to scale and perfect competition. In the case of increasing returns to scale, what happens that the average cost of production continue to decline. Increasing returns to scale in the production, because of that cost will decline. If there will be decreasing returns, then cost will increase. In the case of constant return, it remain. So in the case of increasing returns, average cost decreases. When average cost decreases, then marginal cost will be below it. MC cut AC at the minimum point, but if AC is declining, then MC is below the average cost. Now why perfect competition cannot happen here? Under perfect competition, price is equal to, but here what is the relation between marginal and average? Marginal cost is less than, but if you equate price with marginal cost, which is less than average cost, it means price will be less than average cost, which means continuous loss. So in the continuous loss, firms will leave the market. There will be no longer a large number of firms prevailing in the market. So market cannot be competitive in the case of increasing returns to scale. Perfect competition का assumption ही होता है constant returns to scale होंगे. Describe a model of oligopoly that explain price stickiness. King demand curve hypothesis, Paul-Soddy model. Under rational expectation hypothesis, systematic monetary policy is ineffective. Explain the above statement using a suitable model. Rational expectation का Lucas model का ये direct question है. This is part of macro. In the ISLM framework, the effectiveness of monetary and fiscal policy depend upon interest elasticity of investment. Monetary and fiscal policy effectiveness depend upon interest elasticity of investment. Interest elasticity of investment, this term refers to actually what? Interest elasticity of investment है. Investment का equation क्या लिखते हैं? I is equal to I bar minus BI. So that B refers to interest elasticity. Change in B will affect slope of which curve? IS curve or LM curve? It will affect the slope of IS curve. Slope of LM तो K by H होता है. Slope of IS is minus 1 upon alpha G into B. So B will determine the slope of IS curve. If B is 0, then line vertical होगी. IS का vertical हो गया तो monetary policy ineffective हो जाएगी. तो आपको B की अलग अलग वैल्यूज़ के साथ IS कर्व को स्टीपर और फ्लैटर या उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं. एंड देन वी कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इन अचीविंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द केनिशियन मॉडल. मतलब हाउ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सप्लेनिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द केनिशियन मॉडल. केन्स के मॉडल में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्लासिकल में नहीं होता है. बट क्लासिकल में क्यों नहीं होता है? In classical, money is being used in always, money has only one function, to act as medium of exchange. So if you have money, you will spend it on goods and services. But in the Keynesian, money is also held for speculative purpose. That means sometimes we will not spend it. It will be better to keep cash. But if you are holding some cash, there will be lack of demand for goods. When there will be lack of demand for goods, there will be lack of demand for labor also, and that will result into unemployment. So you have to relate it in this question with respect to the speculative demand. Sterilization concept, ये monetary approach to balance of payment के अंदर है. Those who have covered, they know the monetary approach. Monetary approach we have already done by equating money demand and money supply. Demand for money is KPY. Supply of money is money multiplier into डोमेस्टिक कंपोनेंट प्लस फॉरेन कंपोनेंट. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. वैसे टैक्स बर्डन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बायर एंड सेलर इन द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक आपने किए हुए.
सो यू कैन अटेम्प्ट, ये स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया। फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अंडर व्हाट कंडीशन इट रिड्यूसेस क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इट इज़ रेफरिंग टू बेसिकली द मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब ये क्वेश्चन अगर आप पास्ट ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखो, अगेन यू फाइंड आई थिंक 4th और 5th टाइम्स। कभी डायरेक्टली मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लिखा है, फ्रीडमैन रीफॉर्मुलेटेड द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, हाउ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज डिफरेंट फ्रॉम, हाउ मॉडर्न क्यूटीएम इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल इज इनकॉम्पेटेबल विथ एचओ मॉडल। Factor intensity reversal is incompatible with HO model. Main idea of HO model, first, HO model is based upon which assumption? There are many, but what are the relevant here? Factor intensity between goods are different but same in both the countries. If factor intensity get reversed, then what is the meaning of reversal? Reversal means that if cloth is produced by labor intensive technique in India, तो मॉडल कह रहा है जो मॉडल का कि इट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय सेम टेक्निक इन दी फॉरेन कंट्री ऑल्सो, बट इफ द फैक्टर इंटेंसिटी गेट रिवर्स, इट मीन्स इफ क्लॉथ इज प्रोड्यूस बाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक इन इंडिया, इट विल बी प्रोड्यूस बाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इन द फॉरेन कंट्री, बट इन दैट कंडीशन इन बोथ द कंट्रीज दे विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन, देन ट्रेड कैन नॉट हैपन। सो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल इज इनकॉम्पेटेबल विथ HO model. Why depreciation of currency is inflationary? ये devaluation के context में question आ रखा है पहले। Devaluation leads to, one devaluation leads to further devaluation. Because devaluation or depreciation, what will happen because of depreciation? That import will become expensive. So when import becomes expensive, your demand will switch from foreign good to domestic good. Once demand will switch from foreign to domestic good, demand for domestic good will increase. With more demand for domestic good, there will be higher prices domestically, and that will lead to inflation. But that is only one part. You have to elaborate it here. अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेटर सेक्शन वाले क्वेश्चन है। कैन कोऑर्डिनेट्स हाइपोथेसिस ऑफ एन इन्वर्टेड यू कर्व बी एक्सटेंडेड टू एनालाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब जैसे कोऑर्डिनेट्स हाइपोथेसिस इनकम इनइक्वालिटी के लिए है, वैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए भी है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द इन्वायरमेंट सेक्शन। देन हाउ मॉडिफाइड SDI इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द HDI एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैन हेल्प इन अटेनिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वायरमेंट के एक्चुअल में यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए इन दैट सेकेंड सेक्शन। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन हो गए और एक वेलफेयर इंडिकेटर का है, एंड वन वी कैन से इंटरनेशनल के 2 क्वेश्चन है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इनफैक्ट 3 क्वेश्चन। सेकेंड सेक्शन इज डोमिनेट इज मेनली इंटरनेशनल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। So in that compulsory you find 3 questions from growth and development and 2 from international. Question number 6 was mainly this question, ये न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में है, बट आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा अगर आप इसको पेशेंस से पढ़ो। तो ये क्वेश्चन आपने क्लास के अंदर कर रखा है इनफैक्ट, बट देयर वाज नो ट्रेंड ऑफ आस्किंग न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस सेक्शन। बट लास्ट ईयर एक हिंट मिल गया था, इंटरनेशनल का एक क्वेश्चन था, so they continued with that numerical in the international economies only. And this question is basically, consider the market for good X in country 1 and country 2. In both market their demand and supply equation are given. country 1 का demand supply दिया है, country 2 का demand supply दिया हुआ है। Assume that there are 2 countries in the world and trade is balanced. Free trade price is stabilized between the autarky price. Autarky means no trade condition. So one country is importing country, other countries, but पता कैसे चलेगा कौन सा importing है? How will get to know? ये क्वेश्चन में तो लिखा है नहीं कि कौन सा importing है कौन सा exporting है. How you will get to know? जिसका internal price without trade higher होगा, 2 प्राइस आप निकालोगे दोनों कंट्री का अलग अलग, तो दोनों के प्राइस जब मालूम हो गए तो एक लोअर आएगा एक हायर आएगा, वाटर के प्राइस हो गया। तो जहाँ पे हायर होगा वो इंपोर्टिंग कंट्री हो गया और जहाँ लोअर आएगा वो एक्सपोर्टिंग कंट्री होगा।
तो वहाँ से पता चल जाएगा कौन एक्सपोर्टिंग है कौन इम्पोर्टिंग है. सो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द इम्पोर्ट डिमांड कर्व एंड एक्सपोर्ट सप्लाई कर्व. यू हैव डन दैट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी. इक्वेट करेंगे तो वर्ल्ड प्राइस आ जाएगा. ये हो जाएगा फ्री ट्रेड का प्राइस. फर्स्ट पार्ट कह रहा है फ्रॉम द फ्री ट्रेड प्राइस एंड जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इम्पोर्टिंग कंट्री इम्पोजेज इम्पोर्ट कोटा ऑफ. तो ये क्वेश्चन इम्पोर्ट कोटा का है, तो कोटा वाला क्वेश्चन करेगा. अपने न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों की हुई है. ठीक है, इसके साइड में आप एक न्यूमेरिकल करके रखते हो सो दैट इन केस अगर वो न्यूमेरिकल में आ गया तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इम्पोर्ट कोटा की कंडीशन में you have to again calculate consumer surplus, producer surplus, and so what happens in the import quota? There will be change in consumer surplus, change in producer surplus, and what will the net effect? Net effect में if you can recall it is production distortion loss, consumption distortion loss and quota rent. तो ये तीनों चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करनी है. सेकेंड में पार्ट में कहा गया फ्रॉम द फ्री ट्रेड प्राइस अज्यूम दैट इम्पोर्टिंग कंट्री इज स्मॉल एंड कंसीडर एन इम्पोर्ट टैरिफ ऑफ 10 पर यूनिट. पहला कोटा के लिए हो गया, सेकंड टैरिफ के लिए हो गया. अरे दोनों ही न्यूमेरिकल हो गया एक ही में. टैरिफ कितने का लग रहा है? तो ये अगर हमने इंपोर्ट डिमांड और एक्सपोर्ट सप्लाई निकाल रखा है तो कैलकुलेट कर सकते हो टैरिफ का इम्पैक्ट. बट केयरफुली आपको वो चेंज करना है. क्या चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल कंट्री की बात हो रही है. अज्यूम दैट इंपोर्टिंग कंट्री इज स्मॉल. Now question is can a small country affect terms of trade? No. तो फिर वर्ल्ड प्राइस चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल प्राइस 10 रुपीज़ से हायर हो जाएगा. कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है यहाँ पे. मतलब आपको डिमांड फंक्शन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज क्वेश्चन इज फॉर द स्मॉल कंट्री. तो वर्ल्ड प्राइस विल रिमेन सेम जो पहले आया है. इंटरनली प्राइस कितने से बढ़ जाएगा? टैरिफ विल बी एडेड ऑन दैट इम्पोर्ट. सो इंटरनली प्राइस विल बी जो भी अर्लियर प्राइस है उसमें 10 ऐड कर देंगे. At that price again you will calculate consumer surplus chain, producer surplus chain. But tariff का overall effect क्या आता था? We said that it is ambiguous because production distortion loss, consumption distortion loss and TOT gain. But ये small country है, तो small country में TOT gain नहीं होगा. Then what will be the effect on welfare? Does this policy increase national welfare? No. Because it will create only distortion of production and consumption without having TOT gain. But एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने ये क्वेश्चन पहले एक बार भी नहीं कर रखा रजिस्टर में then you won't feel confident enough to attempt this question. But if you have done, remember ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपने ये कर रखा है क्वेश्चन, तो you can gain around 7 to 8 मार्क्स एक्स्ट्रा. बिकॉज आप थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन लिखोगे बहुत अच्छा भी लिखेंगे तो 12 साढ़े 12 उससे ज़्यादा नहीं मिलना. And here you can get maximum. ठीक है, but this was a we can say a difficult question, but it was not unexpected question because वो आप कर चुके हैं क्लास कर. A continuous process of innovation and invention would give rise to trade even between countries with similar factor, endowment and taste. Just read that question again and again and try to find which theory you will write, which model you will write. Again, you have done it. A continuous process of innovation and invention would give rise to trade even between countries with similar factor, endowment and taste. Endowment same है, मतलब HO मॉडल की बात तो हो नहीं रही है, टेस्ट भी सेम है. Continuous invention and innovation, so there will be an inventing country, imitating country. प्रोडक्ट पहले कहाँ इन्वेंट होगा? डेवलप कंट्रीज में. It will be secured by patent right and so on. Slowly that comparative advantage will move from inventing country to the, so which model? Technological gap model. So technological gap model, product cycle model is this question. Examine the significance of external economies and product variety in the context of international trade. External economies की बात हो रही है. We have done that. External economies. New trade theories were divided into two parts: internal economies and external economies. So in the case of external economies, significance of external economies. तो external economies में actually what happens? As size of market expand, मार्केट में अगर नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज हो रहे हैं तो ये सेम एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. दैट मीन्स टू प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी कॉस्ट विल गेट रिड्यूस. एंड व्हाई इट हैपेंस?
ऐसा होता क्यों है? वो सब कुछ आंसर के पार्ट में आएगा। वाई इट हैपन्स, एक्सटर्नल इकोनॉमीज मीनिंग क्या होता है एंड वाई कॉस्ट गेट रिड्यूस्ड। वहाँ पे हमने 3 फैक्टर लिखे थे, स्पेशलाइज इनपुट सप्लायर, लेबर मार्केट पूलिंग, नॉलेज स्पिल ओवर, दोज वर द रीज़न वाई एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन। तो जिस कंट्री में फर्म्स पहले इस्टेब्लिश हो गए हैं, नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हैं, उस कंट्री का एवरेज कॉस्ट लोअर होगा एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री। सो विच कंट्री विल हैव कॉस्ट एडवांटेज? दैट कंट्री वेयर इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर, thereby it will give rise to the international trade. Some countries will have cost advantage where industries were established earlier. तो external economies को ट्रेड से लिंक, ह्यूमन कैपिटल एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ह्यूमन कैपिटल मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, जिन्होंने भी सेकंड मतलब जिनकी क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बिगिन हुई है, वी आर डूइंग दैट सोलो मॉडल इटसेल्फ। बट ये पार्ट जो मॉर्निंग वाले बैच है उनको उनके लिए है, वो जिन्होंने कर रखा है। प्रोडक्शन का फंक्शन वहाँ पे लिखते हैं वाई एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल टू द पावर अल्फा एंड h to the power 1 minus alpha, where h is the human capital. So this is basically the new growth theory. Explain the concept of steady state in the context of solar model. ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं क्वेश्चन में। यू हैव टू सिंपली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोलर मॉडल, मेन आइडिया, सोलर मॉडल डिस्क्रिप्शन, स्टेडी स्टेट मीनिंग, ग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेडी स्टेट, एक्सप्लेन ऑल। गोल्डन रूल, लास्ट क्वेश्चन जो है इट इज़ बेसिकली फॉर दैट इन्वायरमेंट। दिस इज बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी आर नॉट सब्स्टिट्यूट बट complementary. So again there is no difficulty in that question. You must know the balance and unbalanced growth strategy. Income inequality is not a cause of concern as long as per capita income is rising. Critically examine this statement. So all 3 questions from that growth and development section. ठीक है, all 3 questions from growth and development. So majorly when you look the question for 2023, you will find that there are few, we can say, अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस दैट उनका ट्रेंड नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट कि हम अब पास्ट ईयर हम देख रहे हैं तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन अगर आप देख करके प्रिपेयर करोगे देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस टाइप ऑफ। तो अगर वो न्यूमेरिकल आपने क्लास में कर रखा है, दैट मीन्स इट बेसिकली हेल्प्स इन दोज कंडीशन व्हेन दैट क्वेश्चन विल कम। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, फ्यू न्यू क्वेश्चन, बट ब्रॉडली द क्वेश्चन वॉज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। एक्सपेक्टेड इन द सेंस जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेट होकर के क्वेश्चन आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और क्वेश्चन तो इजी रहता है बट वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग द माइक्रो, बट इन माइक्रो योर फोकस इज लेट अस से ऑन द कंज्यूमर थ्योरी। यहाँ क्वेश्चन मार्केट का होगा और मार्केट के अंदर भी ओलिगोपोली डोमिनेटेड है। तो ओलिगोपोली के बेसिकली यू गेट कॉर्नर मॉडल क्वेश्चन, प्राइस रिजिडिटी मॉडल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कॉर्नर मॉडल का हो गया ओलिगोपोली का, ये क्वेश्चन भी ओलिगोपोली का है। What is missing basically the monopolistic. No question from monopolistic part has been there. Macro के ISLM से related question है but very few from the neo-classical, neo-Keynesian. But paper set करने के उनके साथ भी limitation है. You have to ask 28 question in total. ठीक है, तो sometimes they will go for the direct question, sometimes they will go for the indirect or applied question. एंड वेरी फ्यू अप्लाइड क्वेश्चन ऑल्सो, बहुत कम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बट अगेन योर स्कोर विल अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन हाउ एग्जैक्ट एक्यूरेट बुकिश लैंग्वेज यू राइट इन द पेपर। जो नोटबुक में आपने लिखा वो कितना आप रिप्रोड्यूस कर पाते हो।